Hello students, today we are going to solve all the exercises of chapter 3, that is metals and non-metals. But before beginning, kindly subscribe my channel to get regular video upload updates. So here's the first question. It is a multiple choice question. Which of the following pairs will give displacement reactions? Okay, like suppose we need to check NaCl solution in copper metal. So we will check sodium and copper, which is more reactive. So sodium is more reactive. So copper cannot displace sodium from NaCl. Similarly, we check for all the four options and we find out the correct option comes out to be option D, because copper is more reactive as compared to silver. So it will displace silver from AgNO3, right? Second is, which of the following methods is suitable to prevent iron frying pan from rusting? ठीक है, rust ना हो उसमें तो हम क्या क्या कर सकते हैं? We can apply grease, paint, coating of zinc. Yes, all are correct. ठीक है, basically air और moisture को touch करने से रोकना है हमें. All right. Next is, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. Okay, this compound is also soluble in water, right? The element is likely to be so calcium, carbon, silicon, iron. So it's going to be calcium, because oxygen reaction with calcium will give calcium oxide, which has a high melting point, right? And it's also soluble in water. Next is, food cans are coated with tin and not zinc because, see, they are coated with tin. You might have seen the food cans, right? Because the reason is zinc is more reactive than tin. All right. So next comes question number 5. This is a very good question. You are given a hammer. ठीक है, एक hammer दिया है आपको, एक battery, एक bulb, wires और switch. Okay. First part is, how can you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? तो इसमें basically हम सभी properties को एक clarity से show करेंगे. ठीक है. हैमर को कैसे यूज करोगे आप? जैसे अगर आप एक मेटल को हैमर करोगे, ठीक है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि वो मैलिएबल होते हैं. ओके, और जो नॉन मेटल है, इट इज ब्रिटल एंड इट विल ब्रेक और इट विल शैटर व्हेन यू हैमर इट. ओके, हैमर को आप इस तरह यूज कर सकते हो. सेकेंडली, आप एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो. You can form a simple circuit using battery, bulb, wires and switch. Okay, और उस सैंपल को उस सर्किट के बीच में रखो. मेटल जब आप प्लेस करोगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. राइट. Next is, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. Okay, hammer test basically हमें malleability check करने में help करेगा, और electrical conductivity हमें conduction of electricity वाली property को check करने में help करेगा. All right, so they will be effective in distinguishing between the two. Fine. Next is question number 6. What are amphoteric oxides? And we have to give examples. So amphoteric oxides are oxides which can react with both acids and bases to form salts and water, right? And examples are aluminum oxide and zinc oxide, correct? Now, these oxides will show dual behavior by reacting with both acidic and basic solutions, correct? Last question is, name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. तो आप इसे एक्टिविटी सीरीज के थ्रू भी चेक कर सकते हो. ठीक है, जो डिस्प्लेस करेंगे उसके एग्जांपल्स आप ले लो, जिंक और मैग्नीशियम. एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन के ऊपर लाए करते हैं, और विच विल नॉट डिस्प्लेस उसमें आ जाएंगे कॉपर एंड सिल्वर, ये हाइड्रोजन के नीचे लाए करते हैं. ओके, so here comes the eighth question. In the electrolytic refining of a metal M, okay, what would you take as the anode and cathode and the electrolyte? तो आपको इस तीन चीजों की चॉइस बतानी है. तो आप एनोड पे क्या रखते हो इसमें? इम्प्योर मेटल M, जिसको आपको रिफाइन करना है. ठीक है. कैथोड पे आप रखते हो प्योर स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल M. ऑल राइट. और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे आप? अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल. M मेटल का ही
सॉल्ट लोगे आप, जैसे सपोज एम कॉपर है आपका, तो आप इलेक्ट्रोलाइट में ले सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। नाउ अब इसमें होगा क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, मेटल आयंस फ्रॉम द इम्प्योर एनोड विल डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और वो कैथोड पे प्योर मेटल की तरह डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्योरिटीज एक स्लज फॉर्म कर लेंगे एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसे आप बाद में रिमूव कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्युष took सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला, ये सेटअप हमें दिखा रखा है, स्पैचुला में सल्फर पाउडर लिया है, हीट किया है। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दी, ये गैस इधर कलेक्ट कर ली, करेक्ट। नाउ इस गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर, करेक्ट। तो आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो गैस क्या रिलीज हुई होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज सल्फर को आप हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स गिविंग यू एन ऑक्साइड, ओके। नाउ अब ये जो हमारा ऑक्साइड है, ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज SO2 इज अ गैस, नो चेंज इन कलर विल बी देयर। लेकिन अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हो, राइट, तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्योंकि SO2 विल बी एसिडिक इन नेचर, वाटर के साथ मिलके वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा, so it will be acidic, okay. And then we have to give the balanced equation for the reaction, it will be S plus O2 gives SO2, all right. Question number 10 says state two ways to prevent rusting of iron. So we can tell any two ways. One can be like application of coating of zinc, which is galvanization. So zinc will act as a protective layer and it will prevent iron from coming into contact with moisture and oxygen. Okay. Second can be painting or applying of grease. It will provide a barrier that protects iron from moist air. Okay. And rust will not be formed. All right. Next question is what types of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, ओके। सो एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसा होगा, एसिडिक, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड विल गिव सल्फ्यूरस एसिड इन वाटर, okay. And next is we have to give reasons for some things. Like platinum, gold, and silver are used to make jewelry. Why? Because they are highly unreactive and they will resist any kind of tarnishing and corrosion. So luster will be maintained over time, right? And they are malleable also. So we can make designs and shapes as per our requirement. Second is sodium, potassium, and lithium are stored under oil. This you have studied. They are highly reactive. So with oxygen and moisture, they can like react and means cause a reaction. Okay. So if we store it under oil, so air and water are prevented from coming on contact with them, and these prevent any hazardous reactions. Next is aluminium is highly reactive metal, yet it is used for making utensils for cooking. ओके, सो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब वो एयर को एक्सपोज होता है, ओके। ये फर्दर मींस डैमेज को प्रिवेंट करती है और हम इसीलिए इसे कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज कर सकते हैं। Last is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. आपने देखा था हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। तो ऑक्साइड का जो कन्वर्जन होता है इनटू मेटल थ्रू रिडक्शन प्रोसेस वो काफी इजी होता है, ठीक है, उससे सिंप्लीफाई हो जाता है ओवरऑल प्रोसेस, इसलिए हम ये स्टेप को कैरी आउट करते हैं, करेक्ट। So 13th question is, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. ठीक है, explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. तो जैसे हमारे कॉपर वेजल्स हैं उस पे क्या जनरेट हो जाती हैं लेयर्स, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, ओके। और जो लेमन या टैमरिन जूस है उसमें एसिड होती है, जैसे सिट्रिक एसिड होती है लेमन में, टैमरिन में टार्टरिक एसिड होती है। तो इन कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट कर जाती है और सॉल्युबल कॉपर सॉल्ट्स फॉर्म करती है, तो वो वॉश कर सकते हैं हम वाटर से, तो उससे जो शाइनी सरफेस है वो रिस्टोर हो जाएगा, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज देम, करेक्ट। Next is differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties.
So metals will tend to lose the electrons and form positive ions. Okay, that is cations. Metals react with acids to give hydrogen gas. They form basic or amphoteric oxides, and they are good conductors of heat and electricity. And if we consider nonmetals, they tend to gain electrons and form negative ions that are anions. They do not react with acids to produce hydrogen gas. They form acidic or neutral oxides. Okay, and they are poor conductors of heat and electricity. So question number 15 we discuss now. It's a very interesting question. पहले आप इस question को you try to understand. Okay. A man went door to door posing as a goldsmith. Okay. And he promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. Okay. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. Okay. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. Fine. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? ठीक है, इसमें आपको एक रोल प्ले करना है डिटेक्टिव का, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसने क्या सोल्यूशन यूज किया होगा इसके लिए. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द नॉलेज ऑफ आर केमिस्ट्री. ओके, सॉल्यूशन जो है आपने जैसे स्टडी किया था चैप्टर में, इट इज एक्चुअली एक्वा, हमने एक लेक्चर में स्टडी किया था. अगर आपने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर भी देख लो. एक्वा मिक्सचर में क्या होता है, वी हैव 1:3 रेशियो में मिक्स्ड होती हैं एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, एक्वा में गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है और उसमें क्या जनरेट हो जाता है, क्लोरोऑरिक एसिड HAuCl4. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ गोल्ड वेट. अब इस गोल्डस्मिथ ने क्या किया होगा, एक्वा सोल्यूशन लिया और उसकी बैंगल्स उसने गोल्ड की डिप कर दी उसके अंदर. ठीक है, तो अब इस एसिडिक सोल्यूशन में जब उसने डिप की तो उससे क्या हुआ, उसका वेट रिड्यूस हो गया. दैट्स व्हाई. ठीक है, नाउ बट इट मेक्स द रिमेनिंग सरफेस अपीयर शाइनी एंड न्यू. बाकी वो शाइन करने लग गए उसकी बैंगल्स. ऑलराइट, सो this is the reason like why this thing happened. Okay, now we come on to the next question, 16. Give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel. जैसे जनरली आपने देखा होगा स्टील के नहीं बने होते हॉट वाटर टैंक्स, कॉपर के ही बने होते हैं. तो उसका रीजन कैन यू थिंक ऑफ इट? It is because copper is a very excellent thermal conductor. It is efficient in transferring heat. And it is corrosion resistant also, especially in hot water. So it will reduce the maintenance and increase the longevity of the complete part. Okay. Steel वैसे strong और durable है, but it is more prone to corrosion. Water आ गया अगर steel के contact में तो corrosion ज़्यादा हो जाएगा. तो आपको जैसे कुछ additional treatment करानी पड़ेगी, जैसे galvanization and all, to prevent any kind of rusting. बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है हॉट वाटर एनवायरनमेंट में एज कम्पेयर टू कॉपर की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच मटेरियल्स.